વેલ શાર્ક ડે નિમિત્તે વેરાવળની ફિશરીઝ કોલેજ ખાતે ભવ્ય ઉજવણી કરવામાં આવી હતી। વન વિભાગ, કોસ્ટગાર્ડ, ફિશરીઝ વિભાગ, વાઇલ્ડ લાઇફ ટ્રસ્ટ ઇન્ડિયા તેમજ માછીમારો સહિતનાઓ દ્વારા ભવ્ય ઉજવણી કરવામાં આવી છે। માછીમારોને વેલ શાર્ક બચાવતા નુકસાનીનું વળતર બમણું કરાયું। અમેરિકાથી નવી ટેંગ મંગાવાઈ હતી જે વેલ શાર્કને લગાવી અને માછલીની દિનચર્યાનો વિશેષ અભ્યાસ કરવાનો પ્રારંભ કરાશે। स्टोरी रिपोर्ट बाय पराग शंकतानी, गिर सोमनाथ। देखिए, वेल शार्क जो है, जिसको हम साइंटिफिकली रिंकोडोन टाइपस बोलते हैं, वो एक मोनोटिपिकल स्पीसीज है। उसका मतलब यह है कि उसका जैसा और कोई भी स्पीसीज दुनिया में अभी अस्तित्व में नहीं है। और खास बात यह है कि वेल शार्क जो है दुनिया की सबसे बड़ी मछली है और वन्य प्राणी संरक्षण धारा में यह शेड्यूल 1 में आता है, यानी कि लायन या टाइगर को जो लेवल का प्रोटेक्शन मिलता है, वेल शार्क को भी भारत के कायदा में वही लेवल का प्रोटेक्शन मिलता है। और उस दरियाई मछली को बचाने के लिए वन विभाग का साथ सहकार जो है काफी सारे लोगों ने जो दिया है, जैसे कि वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया है जो हमारा टेक्निकल पार्टनर है, टाटा केमिकल्स लिमिटेड है, फिशरीज डिपार्टमेंट है, इंडियन कोस्ट गार्ड है, फिर अपना फिशरीज सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो फिशरीज के साथ जुड़े हुए जो कम्युनिटी है, यानी कि द फिशरमैन कम्युनिटी, तो ये सब लोग मिलके वेल शार्क को बचाए हैं। एंड परम पूज्य मुरारी बापू जी ने भी इसको बचाने का जो संदेश दिया है, तो आप देखेंगे कि एक धर्मगुरु से लेके, कॉरपोरेट सेक्टर से लेके, एनजीओ से लेके, एनफोर्समेंट एजेंसी से लेके हर कोई एकजुट होकर किसी स्पीसीज को बचाने का जो प्रयास किया है, तो वेल शार्क एक उत्तम उदाहरण है। और इसी प्रयासों के लिए 2013 में यूनाइटेड नेशंस इंडिया बायोडाइवर्सिटी अवार्ड भी इस इनिशिएटिव को मिला है। तो अपना गुजरात सरकार ने कार्तिक अमावस को जाहिर किया है कि हम वेल शार्क दिन की उजवनी करेंगे। तो उसी के भाग रूप जो है हम यहाँ पर वेरावल में सब इकट्ठा हुए हैं और इस दिन की उजवनी कर रहे हैं कि भूतकाल में जो कंजर्वेशन किया है, आज हमारी क्या परिस्थिति है और आगे हम क्या करना चाहेंगे। वेल शार्क का जो भूतकाल का टैगिंग प्रोग्राम है वो 7-8 साल पहले का है और उस टाइम में जो टैग डिप्लॉय किया, उस टाइम का जो भी बेस्ट टेक्नोलॉजी था, तो फ्लोटिंग टैग्स डिप्लॉय किए गए थे। और टैग से यही इंफॉर्मेशन मिला है कि ये जो अरब सागर में वेल शार्क का ज्यादातर मूवमेंट रहता है, कुछ की तरफ जाते हैं, कुछ मडागास्कर की तरफ जाते हैं एंड उसके बियॉन्ड भी शायद जाते होंगे, लेकिन टैग की अपनी टेक्निकल लिमिटेशंस होती है कि एक कुछ दिनों के बाद जो बैटरी डाउन हो जाता है या एक दरिया में डेप्थ जाने के बाद जो है सिग्नल नहीं मिलता है। तो जितना हमें अवेलेबल इंफॉर्मेशन है वो ये है कि वो अफ्रीका से आगे जरूर जाती है। अभी भारत सरकार ने हमें परवानगी दी है कि फिर से टैग लगाने का, सैटेलाइट टैग, और वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया के थ्रू हम ये काम कर रहे हैं। यूएस से टैग्स इंपोर्ट किया गया है और अभी जो सीजन आ रहा है, अभी जो सीजन शुरू हुआ है वेल शार्क का, इसमें हम फिर से टैगिंग का अटेम्प्ट कर रहे हैं सो दैट जो लेटेस्ट अभी जो टैग्स अवेलेबल है टेक्नोलॉजिकली, उसको डिप्लॉय करके हम इसमें और ज़्यादा लंबा बैटरी लाइफ रहता है, सिग्नल स्ट्रेंथ अच्छी रहती है, सॉफ्टवेयर भी थोड़ा सा अपडेटेड है। तो हम ये जानना चाहेंगे कि वेल शार्क कौन सी भाग दरिया का यूज़ कर रहा है, कौन सा सीजन का वेरिएशन रहता है, उसका वर्टिकल मूवमेंट सरफेस या डेप्थ का भी कैसा रहेगा। तो ये डेटा हमें मिलेगा तो उसको साइंटिफिकली मैनेज करने के लिए हमें ज़्यादा इनपुट्स प्राप्त होंगी। ये बात सही है कि हम जब फिशरमैन कम्युनिटी के साथ बैठक करते थे तो बार बार यही आता था कि महंगाई बढ़ रही है और वेल शार्क का जो वळतर है वो मैक्सिमम 25,000 रुपये का था, तो इसमें कुछ सुधारा की जाए। तो हमने एक फाइल चलाया और सरकार में ये रजूआत पहुंचाई ऑफिशियल चैनल के थ्रू में, और सरकार श्री ने बहुत ही पॉजिटिव अभिगम रखते हुए 25,000 को सीधा डबल करके 50,000 रुपये तक का वळतर देने का जो जीआर है वो सुधारा करके इश्यू किया है और ऑलरेडी वो अमल में है। વેલ શાર્ક બચાવવાની જે કામગીરી ગુજરાતના વન વિભાગ દ્વારા જે ચાલી રહી છે એ અંતર્ગત અમે જ્યારે માછીમારો દરિયામાં ફિશિંગ કરવા જઈએ ત્યારે અચાનક જ આ વેલ શાર્ક જ્યારે ફસાય ત્યારે ઝાડનું બહુ મોટું નુકસાન થતું હતું અને એમાં જે માછલા આવેલા હોય એ બે બધા છોડી દેવા પડતા, એ ઝાડે તૂટીને જતી રહેતી અને
વર્ષોથી એક 25,000 જેટલી મેક્સિમમ મતલબમાં વધુમાં વધુ વળતરની 25,000ની મર્યાદા નક્કી કરેલી હતી. ઘણા લાંબા સમયથી અમે લોકો માછીમાર સમાજના બધા આગેવાનો જ્યારે વન વિભાગના અધિકારીશ્રીને મળીએ, અમે છેલ્લી મિટિંગ કરી હતી ડૉક્ટર કે રમેશ સાહેબ સાથે, અને એને બી અમે રજૂઆત કરેલી હતી અને સાહેબે એને તાત્કાલિક ધોરણે રાજ્ય સરકારમાં આ વળતર જે છે એ માછીમારોને અત્યારની મોંઘવારી પ્રમાણે જે જાળોનાને એને નુકસાન થાય છે તો એને વધુ વળતર મળે એના માટે રાજ્ય સરકારમાં એ દરખાસ્ત મોકલી હતી. અમે બી ગાંધીનગર વન વિભાગના આપણા મંત્રીશ્રીને બી મળ્યા હતા અને હમણાં જ અમને લોકોને થોડા સમય પહેલાં ખબર પડી છે કે અમને જે વળતર મળતું હતું એ અમારી માંગણી મુજબ એ ડબલ કરી દેવામાં આવ્યું છે. 25,000ની જગ્યાએ 50,000 કરી આપ્યા છે. હા, હવે અત્યારે જે સૌરાષ્ટ્રના દરિયામાં જે વ્હેલ શાક જોવા મળતી હતી, ખાસ કરીને એવી સૂત્રાપાડાથી લઈને માંગરોળ સુધી અને વેરાવળના બાજુમાં, વ્હેલ શાકનો એક સમય હોય છે, એક સિઝનમાં, ખાસ કરીને ગરમીની સિઝનમાં અને ધૂપ હોય એ ટાઈમે વધુ જોવા મળે. એની મોટાભાગની આ જે માછલી છે ને એ બહુ લાંબો રન છે ને, લાંબા જગ્યાઓ પર ફરતી હોય છે, એટલે અમુક વર્ષે એ ઓછી જોવા મળે છે અને અમુક વર્ષે એ વધુ જોવા મળે છે, અને ખાસ કરીને ગરમીના સમયમાં આપણા દરિયામાં, સૌરાષ્ટ્રના દરિયામાં વધુ જોવા મળે છે. કચ્છની પ્રજાનું માનીતું અને કચ્છની પ્રજાના સાથ સહકાર અને પ્રેમથી સાકાર થયેલું એલબી મોલ એટલે કે લુગડા બજાર ફેમિલી શોરૂમ. અમારું એડ્રેસ ભુજ બ્રાન્ચ, અનમ રિંગ રોડ, ભુજ, કચ્છ. મોબાઈલ નંબર 8980413537. માંડવી બ્રાન્ચ, નંદનવન સોસાયટી, માંડવી, ભુજ હાઈવે, માર્કેટ યાર્ડની બાજુમાં, માંડવી, કચ્છ. મોબાઈલ નંબર 6353695514. નોંધ: રવિવારે આખો દિવસ શોરૂમ ખુલ્લો રહેશે.